today हम लोग finish कर लेंगे आज के क्लास में. And dynamic, two categories of errors that we may encounter in a gyro compass is static errors and dynamic errors. We can by critical installation remove the static errors. Static error को zero पे लाने का possibility है. वो मैं अगर अच्छे से installation करता हूँ, अगर मेरा equipment सही है, data transmission सही है, तो I can bring down the errors to zero. But yes, possibility is still there that if not done, there will be an error. The second one is dynamic errors. There are two reasons mainly for dynamic errors. The location of the ship where she is sailing. She may be on the equator, maybe 10 degrees north, maybe 20 degrees south, anywhere she can be sailing. So one factor is its location, the ship's location, where it is. Other factor is when she is there, what she is doing. Whether she is on 15-degree north or south latitude, whether she is anchored or moving. If she is moving, she definitely is moving in a given direction and at a certain speed. तभी तो movement होगा. Velocity is a vector quantity, must be having direction, must have the magnitude. So she is moving. So even this movement, location and movement combined together produces a certain kind of error. Okay, दो चीज हमने कहा था. Location और movement को एक साथ अगर मिला दें तो ये एक हो गया, और नहीं तो bifurcate कर दे तो तीन हो गए. Latitude, movement and something called acceleration. Acceleration क्या है? Change in speed, change in direction. It was now this, now this, now this, now this. So there is a rate at which I'm turning. If I'm beginning to turn faster, मैं पहले धीरे-धीरे मुड़ रहा हूँ, तेजी से मुड़ रहा हूँ, तो there is an acceleration. Can somebody define acceleration? Definition बता सकते हैं जो 9th class में पढ़ा हुआ? Yes. Change of velocity. बोलो नहीं सुना. It is defined as the rate of change of velocity, meter per second square. Yes, meter per second square. Rate of change of velocity. मैं एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी खड़ी थी, अब 10 की स्पीड, 15 की स्पीड, 20, 25, 30, 40, 50 तेजी से बढ़ रहा है. So that is acceleration. मैंने ब्रेक मारा, 50, 40, 30, 30, 10 रुके. Deceleration or retardation. So the ship may also be subjected to this. When she is going rolling like this, जब रोल करके पूरा हो गया तो जीरो पे आ गया, फिर इधर चलना शुरू हुआ. तो at a rate she is rolling, pitching, changing heading, giving full ahead, increasing speed, stop engine, reducing speed. These are all acceleration. So इन सब accelerations के चलते भी थोड़ा सा error आता है. So we are going to now talk about the dynamic errors. First one we take is the location, which is latitude. What is the latitude of the ship? Depending on that, there are certain kind of observations that we see. We will not go into details of this, just to keep it within the frame, within the limits of our approach और syllabus के हिसाब से. We will be familiar with this. उसके पीछे की ज़्यादा कहानी फिर deep में हम नहीं जाएंगे, phase 2 में पढ़ेंगे. But it is what is happening. We know that there are two kinds of gyro compasses. There is, okay, चलो पहले board पे चलते हैं. Let us know the dynamic errors or variable errors. Can be, one is latitude error. Other one is called steaming error, also known as LCS error. We will see why. What is LCS? We have rolling error. We have ballistic deflection. There are a few others, but we will not go into that, which is basically byproduct of ballistic deflection only. So mainly 4 types of error is what we are going to talk about. First one is the latitude. That means it is related with the location of the ship where she is sailing. We know that a north-seeking gyro compass is tracing an elliptical path. When we do the damping, there can be 2 types of damping. Damping in tilt and in azimuth. There are 2 types of damping, right? याद है या नहीं? Yes, sir. Damping in tilt is used in top heavy gyro compass, and damping in azimuth is used in bottom heavy gyro compass.
These two different types of gyro compasses have different kind of nature. When we do the damping, let us talk about this first. The gyro compass is damped in tilt. तो जब हम damping करते हैं तो this cycle becomes like this and it is settling down pointing into the board is the north. So she is horizontal and pointing to north. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So she is settled now. पहले north seeking में यूं हो रहा था, जब हमने damping कर दी तो gradually the amplitude is reducing and finally settling down pointing to north. This is horizontal, this is the meridian pointing to north and horizontal, not ऊपर, not नीचे, not east, not west. If we are on 0 degrees latitude, that is equator, this is the situation. On equator, it will be horizontal and pointing to north. But if we go up in the north or if we go down in the south, if the shape is not on equator, then it is seen that it is settling down like this. That means थोड़ा सा east में चला जाता है और थोड़ा सा ऊपर हो जाता है. It will settle somewhere here. That means थोड़ा सा azimuth meridian से east को चला गया और जमीन से थोड़ा ऊपर हो गया. So it will not settle like this, it will settle like this. अभी उधर बता रहा है कि नॉर्थ उधर है, जबकि नॉर्थ इधर है, यहाँ है नॉर्थ, वो बताता है कि उधर है नॉर्थ. अगर हम लैटिट्यूड में और ऊपर गए तो this settles down with more error and more above the ground. If we go further up, then it is settling here, more error, more tilt. That means it is no longer is pointing towards the meridian, but it is saying कि north उधर है, east में गलत बता रहा है मुझे. That is the azimuth error. If we go down south, initial latitudes पे it will settle down here. Now what is the nature here? It is settling down towards the west और जमीन के नीचे. Error is not easterly but westerly. If we go further down south, the settling point is somewhere here. More downwards, more westerly. और नीचे जाते हैं हम तो ये और भी बढ़ता जाता है. So if we connect all these points, settling points, we see that there is a curve like this. On equator, it is all right, pointing to meridian, also horizontal. But go up in the north, it is settling down here, 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 here. जैसे जैसे हम latitude में ऊपर जाते हैं, error बढ़ता जा रहा है. Also, it is settling with positive tilt. That means ऊपर की तरफ settling. Pin axis horizontal नहीं है, ऊपर है. It is not horizontal, ऊपर और east. When we go down south, the settling point is like this. This is called latitude error. Why it is happening? Because of latitude. If latitude is 0, the error is 0. If latitude is small, error is small. If latitude is more, error is more. So in short, how do we define latitude error? Latitude error is error of the settling of the gyro compass with easterly azimuth error when we go in the north and westerly error when we go down south. The spin axis does not point to north, but it points little to the west in the south and to the east in the north hemisphere. अभी तक कोई क्वेश्चन? सर फिर इसको ठीक कैसे करेंगे हम? ओके, एक तो ये कि हम मैनुअल करेक्शन कर सकते हैं बिना इसको, मतलब मैनुअल एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने हेडिंग में जो हमें स्टीयर करना है, कोर्स टू स्टीयर को हम कंसीडर कर सकते हैं इस एरर को और उसके हिसाब से अपना कोर्स सेट कर सकते हैं. आगे देखेंगे कैसे. दूसरा ये कि इसके लिए लैटिट्यूड एरर करेक्शन होता है जायरो कंपास में. बट बिफोर वी करेक्ट इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर की ये है कितना करेक्ट, कितना करेंगे. ईस्ट होता है, वेस्ट होता है तो समझ गए, लेकिन कितना होता है भाई? क्या रिलेशनशिप है इसका नॉर्थ के साथ, मतलब लैटिट्यूड के साथ? अगर 10 डिग्री नॉर्थ पे है तो कितना एरर होगा? अगर 20 डिग्री साउथ में है तो कितना एरर होगा? वेस्टर्ली तो होगा, देख लिया. बट देयर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ द लैटिट्यूड विद द एरर. इज दैट राइट और नॉट? Yes, sir. So to do that, we have a formula: sin azimuth is equal to k tan latitude. K is normally 1/40 in gyro compass. It is a constant
K is known as damping factor. Or may be termed as eccentricity of ellipse. Basically ये elliptical path था ना? Yes, sir. Elliptic. तो क्या ये ellipse है या नहीं? Is this ellipse the green one? Yes, sir. So what is the difference between this ellipse and this ellipse? What is the difference between them? Eccentricity. Eccentricity. The eccentricity of this and this are different. Sir, actually eccentricity होती क्या है? It is a parameter by which we define the shape of an ellipse. Why an ellipse is made? Because it is kind of equidistant from 2 points. Locus trigonometry में मत जाओ, बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि some parts will have to, that is eccentricity is totally, geometry. अगर इस पे नहीं जाना चाहते हो तो remain more with the known facts. Damping factor. Damping factor है क्या? तो PC by 40 is equal to PD. Damping is 1 by 40 of the PC. Remember कि damping is an opposing force. PD is an opposing force to PC. Is that right or not? स्प्रिंग उधर से धक्का दे रहा है, लिक्विड इधर से धक्का दे रहा है. डैम्प जो कर रहा है वो कम होता है फॉरवर्ड फोर्स से. दरवाजा जब खोलते हैं तो दरवाजा का स्प्रिंग जीतता है और दरवाजा फाइनली बंद होता है, लेकिन लिक्विड क्या करता है? उसको ऑपोजिशन देता है. करेक्ट? करेक्ट और नॉट? तो ये पीसी. हाँ जी. सर ये पीसी क्या था? कंट्रोल प्रेसेशन. जो हमने वेट लगाया था, इसके चलते जब टिल्ट होती थी तो ये कंट्रोल वेट यहाँ पे लगता था. देन इट वाज कमिंग टुवर्ड्स द वेस्ट और नॉट. कंट्रोल प्रेसेशन. सही. और जो हमने बाद में इसको रिजर्वायर पे करके ऊपर में डैम्पिंग का वेट लगाया था, डैम्पिंग से डैम्पिंग मिलती थी, which was opposite to tilting. Yes, sir. So कितना फोर्स ऑपोजिशन का लग रहा है? जो डैम्पिंग का फोर्स, सॉरी, कंट्रोल प्रेसेशन का फोर्स लगता है, उसका 1 by 40 होता है डैम्पिंग का फोर्स. So don't go into all this. आपके लिए just knowing the term that K is known as damping factor and default value is 1 by 40. Take out your notes. Take out your notes. अच्छा चलो वो बाद में पढ़ना. So this is the settling curve of a gyro compass which is damped in tilt. Top heavy वाले में होता है ऐसा कि there is easterly error in the northern hemisphere and westerly error in the southern hemisphere. So if we take the curve, settling curve, basically for a compass damped in tilt, the settling curve is like this. Azimuth error east, azimuth error west. Given by sine azimuth is equal to K tan latitude. Of course, azimuth is equal to sine inverse K tan latitude. If the latitude is 0 degree, what is the error? Yeah? 0 degree. 0 degree. So sine azimuth is equal to 0, मतलब azimuth is equal to 0. तो इक्वेटर से ये 0 होता है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल you are sailing at 35 degrees north. What is the error with this if we take the value of 1 by 40? Just for understanding, we are not doing any numericals here. Just for understanding the formula, we are doing this one calculation only just to find out कि अगर 35 नॉर्थ पे है तो एरर कितना होगा. Calculate it. सर रिपीट करना सर, बीच में नेट बंद हो गया था.
क्या रिपीट करूं, कहां तक सुने थे, सो बताओगे तब ना। सर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे बोला था आपने, डायग्राम में आया था। हाँ, तो यहाँ पे अगर लैटिट्यूड 0 है तो tan 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 1 कितना होगा? तो अजीमुथ 1 डिग्री आ रहा है। अजीमुथ 1 डिग्री मतलब 35 डिग्री नॉर्थ पे, ओके सॉरी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 35 नॉर्थ पे 1 डिग्री ईस्ट का एरर आएगा, 1 डिग्री इधर को होगा। ठीक है, अगर 70 डिग्री नॉर्थ करें तो ओके, जस्ट ये कह रहा था जो आपने पूछा कि 0 डिग्री इक्वेटर पे एरर 0 है। जब हम 35 नॉर्थ पे गए तो हमने कैलकुलेट करने के लिए देखा कि कितना ये एजिमुथ एरर जो है, जहां पे मेरिडियन से कितनी दूर मेरा जारो बता रहा है, तो हमने देखा कि 1 डिग्री होता है एरर व्हेन वी आर एट 35 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो जब हम 70 डिग्रीज नॉर्थ पे जाएंगे तो क्या ये 2 डिग्री हो जाएगा? चेक इट एट 70 डिग्रीज नॉर्थ, व्हाट विल बी द एरर, एजिमुथ एरर, हाउ मच ऑफ ईस्टर्ली एरर विल बी देयर? 3 डिग्री 56 मिनट। हाँ जी, 3 डिग्री 56 मिनट। 3 डिग्रीज 56 मिनट्स। यस सर। लैटिट्यूड डबल होने से ये डबल नहीं हुआ, ज्यादा बढ़ गया। tan 90 इज इक्वल टू, अगर पोल पे चले गए तो क्या होगा? इन्फिनाइट आ जाएगा सर। That is why the gyro compass do not work near the poles. The latitude error will become infinite at the pole. It will not know where to go. पोल पे टिल्टिंग होगी नहीं, यहां सिर्फ ड्रिफ्टिंग होगा, टिल्टिंग होगी नहीं तो कंट्रोल प्रिसेशन लगेगा नहीं, तो वो किधर को दिखाएगा? पोल पे कुछ है ही नहीं, नॉर्थ किधर है पोल पे? वो तो खुद ही नॉर्थ है। इसलिए gyro compass does not work on the pole or very close to the pole. 85 डिग्रीज पे आपको बहुत सारा एरर मिलेगा, 90 पे इनफाइनाइट हो जाएगा। So gyro compass is good for navigable waters within this and this, which is approximately 75 degrees. और खींच खास के 80 डिग्रीज पर भी चलेगा, बट एरर थोड़ी ज्यादा होती है। So it is good for this range of latitudes. Beyond that, error becomes too much. Are we good? What is latitude error of gyro compass? Now, this latitude error, it is called latitude error क्योंकि ये error latitude से ही आती है. So one name is latitude error. It is settling at the wrong position, not here but here. So it is settling problem also, correct or not? So it is also known as settling error. In which compass did you see? Which kind of compass if this behavior is observed? Gyro compass. Which type of gyro compass? The top heavy. Top heavy. That means damped in tilt, correct? Yes sir. Top heavy में always damping and tilt happens. So this is an error of damping. So it is also known as damping error. How much of error you are getting? How much of error you are getting? It is tan of the latitude, correct? This error is a function of tan of the latitude, correct? Correct sir. It is, therefore it is also called tangent error. Tan is tangent basically. So it is known by 4 names. In your exam, most likely you are going to encounter, describe what is tangent error. You know we are talking about latitude error. Remember this diagram. When you write the answer, make this diagram. More specifically, you can make this diagram in this manner. Horizon, meridian, damping or damping error curve. Here it is settling where the tilting is opposed by damping precession. Drifting is opposed and equaled by control precession. जहां पे ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं वहीं पे टिक जाता है। Same case here. Tilting is happening downwards in the southern hemisphere. Drifting is happening westward. Damping is opposing to that. PD is trying to bring it towards the horizon. Control precession is trying to bring it towards the meridian. जहां पे ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं वहीं पे सेटल हो जाता है। So this is the diagram you should make for damping error.
Okay, sir. Any questions? सर नीचे सदर में लेफ्ट में हो गया, हॉरिजॉन के साथ ड्रिफ्टिंग हो गया ना? इधर वेस्टर्ली होता है ना, और वेस्ट साइड है सदर में सर। यहाँ पे ईस्ट जा रहा है ये और यहाँ पे वेस्ट जा रहा है, हाँ सर। तो टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग नेगेटिव होती है साउथ में, वेस्ट की तरफ होता है, नीचे की तरफ जाता है, ऐसा जाता है, हाँ सर। और नॉर्थ में उल्टा होता है, ईस्ट में और अपवर्ड्स टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग होती है, करेक्ट? यस सर। So that is what it is saying. It is the error is towards the west, error is towards the east. In northern hemisphere, error is easterly. In southern hemisphere, DE or damping error is westerly. Westerly, easterly from the meridian. Here it is going to settle like this. In south, it is going to settle like this. If it is 35 degrees, जहाँ 1 degree हुआ था, वही 1 degree यहाँ पे भी होगा 35 south में. But that 1 degree will be west error. Here it will be 1 degree east error. That error will be 1 degree east. In north, same 35 degrees पे south में it will be how much? 1 degree west. ठीक है? Are we good? Yes, sir. Okay. If the gyro compass is damped in azimuth, इसमें कोई damping error नहीं होती. Horizon, meridian. When the gyro compass is damped in azimuth, there is no latitude error or damping error or tangent error or whatever. Then how is the settling of the gyro? On equator, it will be like this, horizontal and pointing to north. If you go up in the north latitude, it will settle down pointing to meridian but with positive tilt. रहेगा मेरिडियन की तरफ ही, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नॉर्थ में ये ऐसा सेटल होएगा, उधर दिखाएगा, दिखा रहा मेरिडियन की तरफ ही, ईस्ट वेस्ट एरर नहीं, but it is above the ground in north and below the ground in the south. As you keep on increasing in latitude south, it will settle down like this, downwards. On equator like this straight, on equator like this straight, in the north like this, in the south like this. Downward tilt के साथ south में, upward tilt के साथ north में, on equator horizontal. So there is no damping error in case of gyro compass which is damped in azimuth. We are not going into whys and hows of all this. We are just talking about the result that we see. Do we understand this? Do we Yes. understand this very clearly? That on purpose we are not going into whys and hows of this. Yes, sir. Yes, because it is beyond our, criteria right now. Phase 2 में आप बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. आगे जाएंगे तो और डीप हम जाएंगे. Next one is steaming error. Remember, we all said that it is also called LCS error. Sometimes it will be CLS error, etc. आगे पीछे नाम हो सकता है, but this is latitude, this is course, this is speed. Basically, where she is sailing, what course she is doing, what speed she is doing. All this put together is what the steaming is all about, right? Yes, sir. So that is why both are same things. To understand this steaming error, we need to understand few things. This is the Earth. This is North Pole. This is South Pole. This is the equator. She is moving on the equator. I mean, around the axis at 15 degrees per hour के रेट पे अर्थ घूम रहा है या नहीं? Yes, sir. If a gyro compass is here, she is pointing to north. Correct? अभी हम डैम्पिंग एरर को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए. ऐसा मान लो, इसको यहाँ पर रख देते हैं. If the compass is here, she is pointing to north. Correct? Yes, sir. If she is here, she is still pointing to north. Correct? Yes, sir. When she is here, she is still pointing to north.
always aligned with the meridian, correct or not? Yes, sir. That means if we see at this place, Earth is moving in this direction and she is perpendicular to the motion of the Earth here. Correct? Earth is moving east-west. Earth is moving east-west. It is pointing north-south. So it is 90 degree or not? Yes, sir. When she is here, it is north-south. She is still moving east-west. Correct or not? So 90 degree. When she is here, she is moving east-west and it is still pointing to north. Again 90 degree. So Earth के peripheral motion से what is the settling direction of the gyrospin axis? At what angle it is settling all the time with the Earth's motion? सर ये तभी है जब पे नेक्स्ट वो लैंड आउट इक्वेटर पे सर ये होगा, बाकी जगह पे तो नहीं होगा सर, बाकी लैटिट्यूड नहीं हो। मान लीजिए मैंने कहा कि लैटिट्यूड एरर को अभी छोड़ दो। फॉर नाउ discard or omit the latitude error. Normally it is 90 degree to the peripheral motion of the Earth, right? Yes, sir. So this is coming about because of tilting, drifting, Earth motion, gravity, everything put together. जब हमने सारा काम कर लिया, तो we find that the gyro compass settles down 90 degree to the motion experienced by it. अगर यहाँ पे एक जहाज खड़ा हो और उस जहाज में एक gyro compass है, तो gyro compass अर्थ के इस मोशन को एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं? इधर को जाता हुआ महसूस करेगा और उस चक्कर में परपेंडिकुलर टू दैट मोशन शी विल सेटल डाउन, करेक्ट? दोबारा बताना सर जी, ये वाला एक बार रिपीट करना सर। ओके। अगर अर्थ के मोशन को देखें तो अर्थ इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इज दैट राइट? एंड द gyro compass settles down 90 degree to this if she is having no error. तो इस मोशन के 90 डिग्री पे सेटल होता है, दैट राइट और नॉट? यस सर। अगर जहाज खड़ी है तो सिर्फ ये मोशन इसको मिल रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा इमेजिन करना आसान होगा अगर हम इसको इसमें देखें। कहां गया? 1 सेकंड। One moment. She is here. Earth is moving like this. तो ये जो जायरो है वो इस मोशन को एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं? और इस मोशन के 90 डिग्री पे है या नहीं? ये इधर को चल रही है अर्थ और ये 90 डिग्री इस मोशन के 90 डिग्री है या नहीं? Always pointing to north. Yes sir. So that is what we are saying. This is this motion. This one is this motion. And this one is this. तो अर्थ के मोशन के परपेंडिकुलर होता है ये. Is it all right or not? Yes sir. So the gyro is pointing to this. Gyro north is here. True north is also here. All right. When the ship is stationary at the sea. But suppose it is at 0 degree, equator पे खड़ी थी, and she is doing a northerly course at speed v. यहाँ point A पे चली थी, let us say 10 बजे. 10 o'clock she started from equator. She is going at let us say 10 knots. और let us say 10 knots की जगह 30 knots. तो 1 घंटे में वो लैटिट्यूड 0 डिग्री से चढ़ के 30 मिनट्स लैटिट्यूड पे आ जाएगी या नहीं? Yes, sir. तो इक्वेटर से 30 मिनट्स नॉर्थ में आ जाएगी। इतनी देर में ये 15 डिग्री घूम चुका होगा कि नहीं? 15 डिग्री घूम चुका होगा या नहीं? Yes, sir. इस डायरेक्शन में 15 डिग्री, बट इनटू 60 इज 900 माइल्स और नॉट? Yes sir. So this in 1 hour at 11 o'clock, this ship has come in longitude. She has come here, which is 900 miles. ये वाला वेक्टर, और this one is 30 miles. Correct or not? She started from here and she reached here. So the resultant motion that the gyro experienced was from here to here. Is it correct or not? सर ये 900 माइल समझ नहीं आया सर, ये दोबारा बताना। अर्थ 15 डिग्री पर आवर के स्पीड में चलता है। यस सर। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 माइल्स। यस सर। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना माइल? सही है सर, 900। तो जो ईस्ट वेस्ट मोशन है वो 900 पर आवर का स्पीड है। जहाज अगर खड़ी है इक्वेटर पे तो शी इज मूविंग साइडवेज इन व्हाट स्पीड? 900 माइल्स पर आवर। 900 माइल्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, 900 माइल्स। 1 घंटे में 10 बजे चली, 10 बजे से ऑब्जर्वेशन शुरू किया,
1 घंटे में 900 माइल्स इधर को गई, अर्थ का इक्वेटर जो है सो घूम चुका है ऐसा 900 माइल्स। इस बीच में जहाज ऊपर की तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ 30 के स्पीड पे, सो 30 माइल ये दैट वाज v। तो यहां से चली जहाज नॉर्थ के हेडिंग पे, वहां पहुंच गई है या नहीं? So the gyro compass experienced a motion, actually this one, कि gyro compass जो इधर को जा रहा है, is it right or not? थोड़ा देर latitude में बढ़ता जा रहा है। So this is the resultant, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then because of all its properties, it will try to settle down perpendicular to the resultant motion experienced by the gyro. Gyro जो है वो यहां से चली थी 0 latitude पे, 30 minutes north latitude पे पहुंच गई। This was the resultant being experienced by the gyro compass, and so because of this she will settle down perpendicular to this. So north से वो deviate हो गया या नहीं? True north was here, gyro north is now here. So the spin axis is shifting to westerly error or not? इस केस में gyro compass will point in this direction. False meridian is towards this. So although true north is there, the gyro tells me no, it is there, which is wrong. It has got westerly error. When there is a northerly movement of the northerly speed of the ship, then the spin axis is not settling to this, but she is settling to the west. North की तरफ नहीं, north से west की तरफ बताता है। Yes, sir. Are you getting it? If the ship was going down south, let us say at the same speed v, then the ship which was heading south like this will have reached in that 1 hour like this or not. So the experience of the motion by the gyro compass will be this resultant or not. Gyro यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया। पहले latitude 0 पे था, अब 0 डिग्री 30 मिनट्स साउथ में पहुंच गया या नहीं? Then the gyro will have a tendency to settle down perpendicular to this resultant. What it will do? She will settle down here. What kind of error? Easterly error. Yes, sir. So ये difference जो error आया है, is it not the same difference? पहले यहाँ से ये 90 था, अब ये इतना आया, तो इतना ही error हुआ है कि नहीं? इस थीटा के बराबर ये error हुआ या नहीं? सही है, सर। और जो यहाँ पे थीटा 2 हुआ था, मान लो भाई थीटा 2 यहाँ पे है। Yes, sir. तो इस थीटा को निकालने के लिए we know this is 900, this we know is 30 miles. So can we find out the degrees? Then theta is equal to 30 by 900, which is basically perpendicular by base. Perpendicular by base. Yes, sir. So here we see that this is 9 ship's speed, and here we see that is peripheral speed of the earth. But one thing you will appreciate, that if it is rotating at 15 degrees per hour, the speed, अगर ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री यहाँ पे, क्या पोल पे भी 15 डिग्री will be 900 miles or what? नहीं, सर। पोल पे तो 0 हो जाएगा ना। पोल पे आज से मैं चलूंगा तो नहीं, मैं तो अपनी जगह ऐसा एकदम एक्सिस में घूमूंगा खाली, Yes, sir. लीनियर मोशन तो नहीं मिलेगा। तो at pole at 90 degree latitude the peripheral speed is 0. At 0 degree latitude it is maximum. So what kind of relationship trigonometric function we are seeing here for the peripheral speed? Cos वाला, sir. Cos. So actually this is 900 cos latitude. ये कितना स्पीड होगा will depend on the latitude. यहाँ पे मैक्सिमम 900 मिलेगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे ये चलेंगे, ये कम होता जाएगा। So basically this base is 900 cos latitude. सर ये 2 मिनट नोट कर लें, सर। करो, लेकिन टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, अगली क्लास भी हमारी है, तुम थोड़ा देर से शुरू करके और उसी से मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, आराम से करो। सर ये नोट्स में भी होगा ना सर ये? एकदम है। ओके चलो निकालो सब लोग नोट्स निकालो। एवरीबॉडी टेक आउट द नोट्स। वी टॉक अबाउट लैटिट्यूड एरर, वी आल्सो टॉक अबाउट स्ट्रीमिंग एरर। अभी एक स्टेप हमें ऊपर जाना है, इससे हमें जेनरिक फार्मूला निकालना है। जहाज सिर्फ हमेशा नॉर्थ या साउथ नहीं जाती, उधर भी जाती है, उधर भी जाती है, ईस्ट भी जाता है, साउथ ईस्ट भी जाता है, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सब जगह जाता है। तो उन सब के लिए एक जेनरिक फार्मूला होना चाहिए। तो एक स्टेप ऊपर जाना है।
before you note down, take out the notes which I have given you. Even you can go to the question answer. Yes, have you taken out? तो कुछ बोलता नहीं. क्या हुआ, सब लोग सो गए? नहीं सर, क्या कर रहे हो? जी सर, नोट देख रहे सर। सर ये नोट डाउन करना है कुछ। ठीक है, नोट्स देखो, नोट डाउन वहां से भी कर सकते हो, बट लेट अस गेट योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर फर्स्ट. उसके बाद नोट करना होगा तो वो भी करा देंगे हम आपको, कोई इशू नहीं. और व्हाई डोंट वी जस्ट कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड देन वी गो डाउन टू द नोट्स. सिंस यू नोटेड डाउन, सो मैंने कहा कि नोट्स निकाल लीजिए, निकाल लो. बट शैल वी कंप्लीट दिस पार्ट? Looks like you are interested in seeing the notes. Okay, go ahead. Have you got it? समझ में आ रहा है कुछ जो पढ़ रहे हो? क्या बात है, कोई जवाब नहीं देता. निशांत, switch on your camera. सर निशांत, switch on your camera. सर बोलो. सर ये आपने tan थीटा इज इक्वल टू जो लिखा है, इसमें ब्रैकेट में p अपॉन v क्या है सर? परपेंडिकुलर बाय बेस. tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? सर मेरे को लगा कोई टर्म्स है इसमें कुछ था. ना, कुछ नहीं, बस परपेंडिकुलर बाय बेस. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर ये है 30 माइल्स और यहाँ एग्जांपल के लिए 30 माइल्स, करेक्ट व्हिच इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द शिप. जी सर, सही है. एंड दिस इज 900 cos lap. तो नोट्स में नीट डायग्राम दिया हुआ है, साफ सुथरा डायग्राम. यहाँ तो मैं बहुत सारा कुछ लिखता चलता हूँ आपके लिए, बताने के चक्कर में गंदा कर देता हूँ स्क्रीन को, मतलब बोर्ड को, बट वहां पे नीट डायग्राम है, अगर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा. एनीवे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. स्टीमिंग एरर इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द शिप अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ. द मूवमेंट ऑफ द शिप इज डिस्क्राइब्ड बाय द लैटिट्यूड, द कोर्स एंड द स्पीड, ड्यू टू व्हिच देयर इज एन एरर in the gyro compass. When the ship is having northerly course, then the error is, when there is northerly course, error is वेस्टर्ली. westerly. When there is southerly course, then error is ईस्टर्ली सर. simple as that. That error is given by tan theta is equal to, actually जो सही generic formula है, that is tan
theta is equal to V cos course by 900 cos latitude plus minus V sin course. This is the generic formula. This will apply for any kind of courses. जो भी course हो, 0 degree हो या 45 हो, 50 हो, 90 हो, any course, it will hold good for that. Or even this side, any kind of course, this formula will apply. How did this come? तो इसके लिए मैं डायग्राम मिटा रहा हूं. How we are coming to this is सर जो ये लास्ट फॉर्मूला है सर, ये जो कोर्स होगा सर, ये क्वाड्रेंटल कोर्स होगा या टू कोर्स पूरा वाला भी डाल सकते हो, क्वाड्रेंटल से भी कर सकते हो. क्वाड्रेंटल में कुछ प्रॉब्लम आती है लेकिन सॉल्व होएगा. पूरा कोर्स डालेंगे तो भी आंसर आएगा. सही है सर. दोनों ही केस में क्वाड्रेंटल कोर्स और नॉर्मल कोर्स फुल जो हम 3 डिजिट में लिखते हैं, दोनों का नेट रिजल्ट एक ही है ना. एक ही चीज को हमारे तरीके से बोल रहे हैं. यस सर. सो दोनों से ही सही आता है. दोनों में अप्रोच थोड़ी सी इतनी सी बदल जाती है. अप्रोच कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो बदल जाता है. बट उसमें हम नहीं घुस रहे. वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि फॉर्मूला ये होता है, इससे एलसीएस एरर निकलता है. हम इसको जरूर डिफाइन कर लेंगे कि ये कैसे आया, वी कॉस कोर्स कहां से आ गया, वो जरूर हम करेंगे शॉर्ट में. मिटाऊं? ये सर मिटाओ. अभी हमने टोटल नॉर्थ एंड साउथ कोर्स लिया था, बट हमेशा जहाज तो वैसे चलती नहीं, तो अर्थ का पेरिफेरल मोशन अभी भी 900 cos lat है. लेट अस से द शिप इज डूइंग a northeasterly course at the speed of v. She is doing a course like this. True north is here. Starting point A, B here, AB is 900 cos lat. BC is the speed of the ship at a course CO. The resultant is AC. The angle of inclination is theta, which is the streaming error. The gyro compass is setting down perpendicular to it. Gyro north is here. This is also theta. Would it not be nice to solve this tan theta by if we have available these two values? तो हमारे पास ये बेस हो जाएगा या नहीं? Yes, and this will be perpendicular. So let us say this is D. So अगर हमें BD का फॉर्मूला मिल गया, BD का वैल्यू मिल गया और CD का वैल्यू मिल गया, तो हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना? होएगा या नहीं? नहीं समझ में आया? आ गया सर. आ गया. तो यहाँ V cos course जो है is CD बेसिकली. V cos course is CD. कैसे है वो भी देख लेंगे. 900 cos lat is AB and V sin course is BD. That is all there is, nothing else. पकड़ में आ रहा है? सही है या नहीं? चुप हो जाते तो मैं डरने लगता हूँ. सही है सर. ओके. सो इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास V था, इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. This is V, this is course. We need to find out this and this. This is 90 minus course. Is that right? सही है या नहीं? वही डायग्राम है यहाँ पे. ये सर सही है. B here, C here, C here. This one is basically perpendicular. This is base and this is hypotenuse. Correct? Right angle triangle. Yes sir. So here sin 90 minus cos is equal to क्या होगा? Sin 90 minus cos is equal to P by H is equal to CD by B C. Correct? Correct sir. We know that this is equal to or this is equal to cos is equal to same. Sin 90 minus cos is equal to cos course. सही है? ये सर सही है. So with this, अगर इसको ऊपर लेके जाए थोड़ा सा, आप लोग नीचे ही लिखना. Then CD is equal to how much?
Is it DC cos course Yes, sir. is equal to V cos course? Yes, sir. Yes. And that is why we have taken V cos course. This one is V cos course. Perpendicular हो गया V cos course. CD is equal to V cos course. Similarly, ये वाली वैल्यू निकालिए, DD की वैल्यू निकालिए. Do it yourself. I'm waiting for you to do it. You are doing it yourself. आया वैल्यू या नहीं? Is it V sin course or not? Yes, sir. So there you are. In any situation, this will same thing will apply. कोर्स ये हो या इधर हो या इधर हो या इधर हो, कहीं भी कोर्स होगी, जो भी स्पीड होगा उसके हिसाब से हमें ये मिलेगा और ये मिलेगा. So this is what is steaming error. Tan SE steaming error जो थीटा था वो ऐसे लिख दिया हम, is equal to V cos course by 900 cos latitude plus minus V sin course. सर ये माइनस उस केस में होगा जब कोर्स 180 से ज्यादा होगा. 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा. यस सर, सही. मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन तुम खींच लेते हो मुझको बार बार. तो ये कोर्स इधर था तो ये प्लस हुई थी, अगर कोर्स इधर होता तो ये माइनस होता कि नहीं 900 में से. यस सर, सही. तो ऑल वेस्टर्ली कोर्सेस इट विल बी माइनस, ऑल ईस्टर्ली कोर्सेस इट विल बी प्लस. थैंक यू सर. लेकिन फिर से अगर आप कोर्स लेंगे तो कोर्स अगर 0 से 180 डिग्री है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, और 180 से 360 डिग्री तक लेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी. तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो जाएगा अगर आप फुल लेते हैं तो. क्वाड्रेंटल में प्लस माइनस करना पड़ेगा. अगर पूरा कोर्स लेते हैं 3 डिजिट का तो ऑटोमेटिकली या तो प्लस की वैल्यू आएगी माइनस की वैल्यू आएगी. आप प्लस लेके चलो यहाँ पे और पूरा कोर्स डालो तो ऑटोमेटिक ये माइनस या प्लस हो जाएगा. अगर कोर्स 0 से 180 है तो ये प्लस में आया करेगा, अगर यहाँ से इस तरफ का कोर्स है तो ये माइनस में आएगा. सिंपल एज दैट. यस सर, सही. ऑल्सो अगर ये कोर्स नॉर्दर्ली है तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव में आएगी, अगर कोर्स सदर्ली है तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा. व्हेन नेगेटिव इट इज वेस्टर्ली, व्हेन पॉजिटिव इट इज ईस्टर्ली एरर. नहीं, cos 0 1 से 0, cos 0 पे आएगा 1, cos 90 पे 0. हाँ सही है. ठीक है, एक सेकंड, ये मैंने सही किया कि नहीं? व्हेन इट इज 0 0 0 डिग्री तो cos 0 इज इक्वल टू 1, राइट? तो वैल्यू प्लस में आएगी. cos 45 तो 0 की तरफ बढ़ेगा, मतलब 1 की तरफ बढ़ेगा, प्लस, सॉरी. वेस्टर्ली एरर व्हेन कोर्स 0 to 180 and easterly when 180 to 360.
we take a break 15 minutes. When we come back, we talk about the deflection और rolling error. थोड़ी सी बात करी थी, सिर्फ थ्योरी है उसमें, थोड़ा सा 5-7 मिनट बात करेंगे, तो we will be done with that and we will be Sir. done with. हाँ बोलो. अभी खत्म ही कर देते हैं सर, फिर हमारा लंच ब्रेक है इसके बाद. हाँ तो लंच ब्रेक तो है, तो कितना खत्म ही कर लें. यस सर. ओके ठीक है. What about others? Others want to go on break? I mean majority जो बोलेंगे वो करेंगे. कंप्लीट कर देते कंप्लीट कर लें. चलो. All right. So Sir. we have another one called rolling error. We have this reservoirs on the north and south end of the spin axis. When the ship is rolling, if it was a solid weight, so because the whole thing has gone like this, the thing would have created a torque. So rolling pitching mein, if there was solid weight, if there was solid control, I mean solid weight for gravity control, then it would have created wandering of the spin axis. क्योंकि torque लगता रहता है कभी इधर कभी इधर. तो रोलिंग के चलते ये एरर्स आती हैं, क्योंकि अगर हमने इसको फ्री जायरोस्कोप भी बना दिया है तो भी बेरिंग में whatever finest amount of friction is there, that causes it to hold on, और उसके चलते एरर होती है. That is what is known as rolling error. Because of motion of the ship, the weight keeps on shifting, and that applies a torque on the spin axis. In turn, it will precess east-west, east-west, east-west. Of course, we have used the liquid ballastics to control it, to minimize it. क्योंकि जब इधर को घुमा तब सेंटर वहीं पे लगा रहता है, लिक्विड शिफ्ट होने में टाइम लगता है, मर्क्यूरी है, जब तक शिफ्ट होना शुरू भी नहीं होता तब तक जहाज सीधी हो लेती है. तो मर्क्यूरी बैलास्टिक, लिक्विड बैलास्टिक is minimizing the rolling error. Although we should know what is rolling error, this is minimized by the use of liquid ballastics. However, the nature of rolling error changes depending on the course. Suppose this is north, the spin axis will be pointing in this direction, correct? Correct? Yes sir. The reservoirs, liquid mercury is here and on the south, north south में align होता है spin axis के साथ. सही है सर. अब रोलिंग होके पोर्ट साइड में रोल किया तो क्या लिक्विड शिफ्ट होगा एक तरफ से दूसरी तरफ? यस सर. यस सर. इसमें कुछ ये डिफरेंस आया क्या? अगर डिफरेंस इसमें होगा तब ना आएगा इधर उधर. नो सर. इसमें लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है क्या रिजर्वायर्स के बीच में? दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो सिर्फ इसी में ऐसा होएगा ना. क्या अनुपात ताली बजा रहा है? देखो. So when the ship is on a northerly course and she's rolling, she's going tilting towards west and east, port and starboard. But this does not cause any shift of liquid in the reservoir. वो अपने ही रिजर्वायर में ऐसा हो सकते हैं, but इधर से उधर नहीं जाएगा. नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ में नहीं जाएगा. But when the ship is going east, अब क्या होगा? नॉर्थ में जाएगा. अब जब स्टारबोर्ड को जाएगी तो नॉर्थ एंड वाला साउथ पे जाएगा, जब पोर्ट को जाएगी तो साउथ वाला नॉर्थ की तरफ जाएगा. Opposite will happen when going west. So rolling error is 0 on north and south course, क्योंकि यहाँ पे sideways सिर्फ होता है. But when going east and west, it changes. यहाँ पे साउथ एंड ऊपर तो इधर को लिक्विड, इधर को गया तो नॉर्थ एंड ऊपर, इधर को लिक्विड. So whatever minimal amount of rolling error is remaining, that happens maximum on east-west courses, 0 on north-south courses. Anything intermediate courses, there will be intermediate amount of rolling error. Are we good? Yes sir. Okay. So rolling error बस इतना है कि ship के motion के चलते there is a change of torque is being applied in a very erratic manner on the spin axis, and that causes wandering of the spin axis. To minimize this effect, we use liquid ballastics, which does not respond to fast rolling motion of the ship, and so it minimizes the error. However, due to friction, there is little bit of rolling error, which is very, very minimum, which is zero when on north and south course, and maximum on east-west courses. Are we good? ठीक है? Yes sir. Okay. Then next one is the ballistic deflection. Ballistics means again liquid, again mercury. To understand this, suppose we are going in a train, और ट्रेन में मैंने एक ग्लास पकड़ा हुआ है अपने हाथ में जिसमें पानी भरा हुआ है. ट्रेन खड़ी है, ट्रेन अचानक झटके से बढ़ती है, 0 स्पीड से कुछ स्पीड पकड़ती है,
ये जो पानी भरा हुआ है उसका क्या होगा? पीछे जाएगा आपकी तरफ। लिक्विड फ्लोज, क्योंकि लिक्विड अपने ग्रेविटी के चलते इनर्शिया के चलते वही रहना चाहती है। ग्लास आगे बढ़ गया तो पानी गिरती है पीछे। गाड़ी चल रही थी, पानी भरा हुआ था, मैं भी उसी मोशन पे, पानी भी उसी मोशन पे, ट्रेन भी उसी मोशन पे, सब कुछ बराबर था। अचानक ब्रेक मार दिया, मैंने पकड़ के रखा, मैं नहीं गिरा, पानी का क्या होगा? आगे जाएगा हमारी तरफ। Same thing happens in liquid ballistics. When the ship is stationary and she gives engine, she starts to move. Let us say she is moving on the north course. The reservoirs are like this. When she is moving forward, this liquid will be flowing towards the back end or not? South end की तरफ liquid flow होना शुरू करेगा, करेगा सर। तो south end भारी हो जाएगा. There will be westerly deviation. When she is going steady course and she stops, she gives dead, engine stop and a stern. तो 15 नॉट पे जा रही थी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है. She is retarding. The liquid will flow towards the north end or not? सही है सर। There will be easterly error. It will happen only during the acceleration part. Once she settle down on a new course, everything acquires the same speed, फिर balance हो जाए. So this shift of the liquid is happening only during change of speed or course also. तो अभी हमने देखा नॉर्थ साउथ पे ये शिफ्ट हो रहा था. अगर मैं नॉर्थ के इसमें जा रहा हूं, स्पीड बढ़ाया या कम किया तो शिफ्ट हो रही थी. अगर मैं साउथ जाऊं तो भी वही चीज होगा. तो ये बैलिस्टिक डिफ्लेक्शन, आई एम सेइंग दैट इट इज हैपनिंग ऑन द नॉर्थ साउथ कोर्स, बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम गोइंग ईस्ट और वेस्ट? तो तब नहीं होगा। नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो अपने ही रिजर्वॉयर में पीछे की तरफ आएगा या उस तरफ हो जाएगा. देयर वोंट बी एनी शिफ्ट ऑफ लिक्विड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सही है सर। सो बैलिस्टिक डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस मैक्सिमम ऑन नॉर्थ साउथ, जो कि 0 था रोलिंग के केस, उसका उल्टा. बैलिस्टिक डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस मैक्सिमम on the north south courses and 0 on the east west courses. Anything intermediate will have intermediate amount of ballistic deflection. This deflection is only applicable during the time of acceleration or deceleration, change of speed either from less to more or more to less. But when she is settled down, वो जो change हुआ था वो वापस आकर के और settle हो जाता. Then she is okay. Then she will have only the latitude error and the steaming error. If it is damped in tilt, तो latitude error नहीं, तो latitude error नहीं. Damped in azimuth means no error. ठीक है? So these are the dynamic errors of the gyro compass. Keeps on changing depending on the latitude, speed, course, rolling, acceleration, etc. ताली बजाओ, खत्म हो गया gyro compass.